from now. सीमा जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी. आपके भी बच्चे होंगे, आई एम श्योर, या नहीं भी होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हादसे को समझने के लिए आपको होना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही अमानवीय घटना है. कैसे देखती हैं इस पूरे हादसे को, और सबसे ज्यादा स्कूल की किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनको कैसे लायबल बनाना चाहिए, हम इस तरह के हादसों को होने से कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ऐसे हादसों को समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में बच्चे हैं या नहीं. हर एक इंसान इन हादसों को समझता है जी. लेकिन छोटी सी बात यह है कि हम हर एक चीज के लिए स्कूल को ही रिस्पॉन्सिबल कैसे कर सकते हैं. अभी एक लेटेस्ट न्यूज आज की है, आपके पास भी होगी, कि दिल्ली की एक लेडी जो 38 इयर्स ओल्ड है, उसके साथ कितना घिनौना अपराध किया गया, तो क्या वहां स्कूल कुछ कर पाएगा? जी. अभी 8-10 दिन पहले गाजियाबाद की ही घटना थी, 2.5 साल की बच्ची, जिसमें स्कूल का कोई रोल नहीं है कहीं तक. और हम अगर बात करें अपने स्कूलों की, तो हिंदुस्तान में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से एफिलिएटेड है, जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो अपने बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, इस सारी चीजों की ट्रेनिंग दे रहे हैं. और हर एक डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम टीचर्स की भी ट्रेनिंग इस चीज के लिए कराता रहता है. एनसीपीसीआर के थ्रू भी चीजें आती हैं, पॉक्सो एक्ट से सारे टीचर वाकिफ हैं, और मुझे लगता है सभी टीचर्स ने अपने स्कूल के बच्चों को भी इस सब से वाकिफ कर रखा है. सीमा जी, मैं आपकी इस बिंदु से पूरी तरह से सहमत हूं कि किसी तरीके का विच हंट नहीं हो सकता. हम पीछे नहीं भाग सकते कि देखिए स्कूल ने ऐसा कर दिया. इस तरह के हादसे सड़कों पर भी होते हैं, सबसे ज्यादा घरों के अंदर होते हैं, उन लोगों के द्वारा होते हैं जो शायद आपके रिश्तेदार हों. ये तो स्टेटिस्टिक्स और फिगर्स ही आपको बता देंगे. मगर ये कहने के बावजूद भी मैं ये कहूंगी कि इंस्टीट्यूशंस की किसी ना किसी तरीके की जवाबदारी जरूर होनी चाहिए. मैं आपके पास वापस आऊंगी. वी आर ऑल्सो गेटिंग कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सोहिनी फ्रॉम हैदराबाद इज कॉलिंग अस. सोहिनी जी, व्हाट डू यू थिंक? टेल अस. As the speaker just mentioned, my day started off with when I was having breakfast. I was shocked to hear the rape of a 38-old woman. Okay, now as I watch television, I'm seeing minors, little girls as old as 4 years only, are being raped. I think none of us have forgotten Nirbhaya yet. Okay. And coming to laws, okay, there are education systems that are talking about good touch and bad touch to little girls, right? So that they are not scared to voice their protest. There are laws like POSH, or Prevention of Sexual Harassment at the Workplace, right? But I think no matter what you do, unless the punishment is rigorous, we have seen in the case of Nirbhaya, in the name of being a juvenile, one of the main culprits was let off because he was 17 years old. I completely agree with you, because we can have strong laws, but if the process is not speedy or swift, that does not, the law doesn't act as a deterrent like it was intended to. Before I go to Amber Zedi, we have another caller. Murthy from Vishakhapatnam is calling us. Murthy, please tell us what you think. Okay. The best option is actually one of the parents should accompany the bus or the vehicle in which the children are traveling, so that definitely the parents are the best protectors. Well, sir, you're right, but I went to school, all my life in an auto or sometimes in a bus. My mother was working for some time and for some time she was not. For the entire duration, it's not possible for the parents to be with the children. So one of the parents, so all the parents are not working, isn't it? One of the parents of the children, they should accompany. Secondly, the punishment should be very rigorous and it should be implemented immediately. There is no point in just postponing for decades. There is no point of having a stringent law like POCSO in the statute books if the trial is not speedy. And, we have a wonderful law in the statute book. POCSO is one of the best laws when it exists, that it exists for the child protection. And more importantly, the manner in which it prescribes that how there should be special courts, a sensitive system, how children need to be protected. All of that is wonderful. We need to implement that in a more, enhanced manner, in a speedy manner. Amar, I'm coming to you. When you heard this incident, and there is a good point which is being made on the broadcast by the other panelists, Seema ji as well, that you cannot completely hold the school liable, but I argue that institutions have a special responsibility.
Instances like these may happen on the road, instances like these may happen in our homes, but schools are institutions where parents trust. They send their children to study at schools. And in today's day and age, you need to have specialized mechanisms to ensure that if something like this is happening, it is controlled, it is stopped as soon as it is brought to light. Of course, because whenever we go to school or when we send a child to school, we think, and we are always back of the mind, we think that our children are safe at the school. But every year, the cases of rape in India are on rise. Amar, we seem to have lost that line with you. I'll come back to you. Prabhakar from Hyderabad is also calling us. Prabhakar ji, tell us what you think. We'll try and connect with Prabhakar as well. Meanwhile, we once again, to our viewers, 0120-434-1895. That's the number on your screen. Call us and tell us what you think. Seema ji, I'm coming back to you. In schools these days, आजकल स्कूलों में या टीचर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए किस तरह की जागरूकता है जब सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है या यौन शोषण की बात आती है या गुड टच या बैड टच की बात आती है? क्या कोई मंथली ऑडिट होता है? क्या बच्चों से बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है? पेरेंट्स के अलावा, अभिभावकों के अलावा शिक्षकों की और स्कूल प्रशासन की किस तरह की जवाबदारी बनती है? बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि इन सब चीजों के लिए अधिकतर सीबीएसई की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी इतनी गाइडलाइंस जारी होती हैं। और मेरी जानकारी में जहां तक है, आप भी जानती होंगी, डाटा भी होगा जी, कि हर एक स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, सेक्सुअली हैरेसमेंट कमेटी बनी हुई है, जिसमें टीचर्स, प्रिंसिपल और कुछ जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, एसएमसी जो स्कूलों में होती है, उनके मेंबर्स भी होते हैं। और मंथली बेसिस पर बच्चों को ये जानकारियां दी जाती हैं। बच्चों को पॉक्सो एक्ट से, सेक्सुअली हैरेसमेंट के जो और एक्ट होते हैं, उनसे रूबरू कराया जाता है। इवन स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग या मेगा पीटीएम होती है, तो पेरेंट्स के साथ भी इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है। लेकिन मेन समस्या हमारी ये नहीं है कि स्कूल से चीजें सुधर जाएंगी सारी। हमारी जो कमियां हैं वो मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है। जी बिल्कुल। क्या मेरा अपना लड़का है या मेरी अपनी लड़की है, तो मैं लड़कियों को तो सिखा देती हूँ चीजें, क्या लड़कों को मैं ये सिखा पा रही हूँ? हमारा समाज जो आज की स्थिति में जा रहा है, आप जिस विषय में बात कर रही हैं वो तो इस समस्या की जड़ है। इस पूरी समस्या की जड़ हमारी सामाजिक रूपरेखा में, उसको हम दरकिरार नहीं कर सकते, उसको तो हमें स्वीकार करना ही होगा। अमर जैदी, आई एम कमिंग बैक टू यू। व्हेन इट कम्स टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच आर इंस्टीट्यूशंस, इन विच आर schools, in which our families operate, that needs a larger reform. There are no two doubts about that. But I'd come to the points which are more tangible and which are more open to change. When it comes to our schools, what is it that we can make better? Because we must have a discussion about it. Other than your homes, if there is one place where parents feel that their children are safe, is the school premises. The children can't be raped and murdered inside the schools. That's not acceptable. Amber, can you hear me? Okay, I think there's a problem with her Amber's audio. Lakshmi is calling us. Let me quickly try and go to Lakshmi from Hyderabad, who's with us on the broadcast. Lakshmi ji, what are your views? Tell us what you think. My views are that these are parents who are very well educated. I am a parent too, and the children should feel secure to tell the parents when something like this happens as soon as it happens. Yeah. That rapport has to be developed so the child, is safer. That's why I'm not blaming the parents, but I think if they can tell expose, whatever is new happening in their life, the parents, they would have caught this matter much earlier before the child suffered so much. That's what I feel. Thank you, Lakshmi ji. Thank you, Lakshmi ji, for calling us and telling us what your views are, cutting across to the live address by the